currently working in Meta in New York, worked in Amazon in Toronto, worked in Dubai at a startup, grew up in Karachi, Pakistan, lived in Saudi Arabia. तो ये मैंने थोड़े points बता दिए. Why do we not see any Pakistanis at the top of companies? Like we see a lot of Indians. Is it because Pakistanis are not good enough, or people from India that come to the Western world, उनके systems इतने अच्छे हैं जहाँ से वो शुरू से पढ़ाई करे आ रहे हैं. Like let's say the IITs of India और इस तरह की जो बड़ी बड़ी जो schools हैं. And I've heard like it's difficult to get into IIT than it is to get into Harvard or MIT. Like it's so difficult. True, yeah. So do you think it's that they have more talent or that they have better systems? Basically like जो country का जो political environment है उसकी एक परछाई है. Whether it is cricket, जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं वो affect करते हैं हर चीज को. Because we are like very similar people like Indians and Pakistanis. Culturally we I think very similar. We don't have like good role models. Now we have young Pakistani founder of that company. Cursor. Hopefully like he's going to be a good role model. Satya Nadella है उनके पास. Sundar Pichai है. We don't have such examples. Yeah, and they're all from I think IITs like India से ही पढ़ के बाहर गए and now they're like Both of them, Satya and Sundar at least I know. I mean the Twitter CEO was an Indian before obviously was bought out by Elon Musk. Yeah, Parag Agrawal. He's building a very cool startup now. He's building a very cool company. I use AI for like a lot of my stuff, for a lot of my work. Let's say if I need to type an email, I just ask AI. लोग बोलते हैं यार खुद का सोचने का पावर तो चले जाएगा. तो मैं बोलता हूँ भाई अगर कोई मेरे लिए काम कराए, it's a tool. If everyone's using it, so technically उनसे आगे निकल जाएंगे. तो मैं सिर्फ अपना दिमाग जो मेरा limited capability है उसकी और AI ज़्यादा बेहतर है तो मैं तो पीछे रह जाऊँगा. Yeah, I mean like it's like saying कि यार आप अपने फल और अपना नाच फूल क्यों नहीं उगा रहे? Kareem was in the country, Uber, and the fact मैंने बहुत podcast सुनता हूँ अभी भी. उस वक्त होते थे बहुत सारे पाकिस्तानी founders आते थे अब कंपनीज के बारे में बताते थे. अब कोई नहीं आ रहा. So वो जो एक boom था, was that COVID boom जो पूरी दुनिया में आया था टेक में अब जैसे Meta and like these big firms. So do you think ये जो पाकिस्तान में भी जो एक startup bubble था या was it कि यार government policies इतनी favorable नहीं थी इसलिए वो sustain नहीं कर सका? It's a bit of both, but on a very high level, I think what it was that interest rates went like down, and so like capital became like very cheap in North America. And they're like, let's try to look for these companies in these countries. Then there were some key players in Pakistan, for example, I think Atif Awam was one of them, former LinkedIn VP. Like he moved back and he started his own fund. So वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आए. Do you ever think of starting your own startup? So you do have the right resume. Do you ever think यार मैं कुछ करूँ? Every day. Okay. Several times a day. अस्सलाम वालेकुम माज़, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम. ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक. यार आपने अपना सबसे पहले तो आपने अपना कीमती वक्त दिया. Big tech guy. So thank you very much. नहीं यार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. मैं आपका पॉडकास्ट देखता हूँ इंस्टाग्राम पे और हैप्पी टू बी हियर. Thank you so much. Acha, before we begin, so I'll just give the audience I'll just summarize your resume for them. तो and obviously मैं आपसे भी आपका introduction लूँगा but जो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ. So currently working in Meta in New York, worked in Amazon in Toronto, worked in Dubai at a startup, grew up in Karachi, Pakistan, lived in Saudi Arabia. तो ये मैंने थोड़े points बता दिए हैं but order में मैं आपसे सुन लेता हूँ. So Maaz, if you could just start off by telling us about yourself कि कहाँ बड़े हुए, क्या पढ़ाई की और कैसे पहुँचे जहाँ अभी हो. राइट. थोड़ी लंबी स्टोरी है, कोशिश करूंगा थोड़ा Yeah, छोटा करके बताऊं. for So sure. born in Karachi, Pakistani. Um, that's where it all started. Um, उसके बाद grew up in Saudi Arabia. That's where my dad used to work. तो फैमिली सारी वहीं थी और 12 साल की उम्र तक 2002-2003 तक वहीं थे. um, और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे मैं होम स्कूल था शुरू में. So I didn't go to school until that age. और उसके बाद फैमिली वापस आ गई पाकिस्तान, मेनली फॉर एजुकेशन क्योंकि वहाँ पे स्कूल्स का इशू था. तो अब्बा ने कहा Sorry, Maaz, interrupting you. पहले पास अपने एजुकेशन के लिए वापस पाकिस्तान जा रहा हाँ, है. आई थिंक अब्बा ने कहा कि भाई बहुत हो गया घर पे, अब स्कूल जाओ. और But फिर how does कराची वापस homeschooling आई. work, Maaz? कैसे होती है homeschooling? सो Like क्या करना होता है homeschooling में वैसे? आई मीन the reason why I didn't go to school in Saudi Arabia, the main reason was कि यार वहाँ पे जितने भी local schools थे, and we used to live in a small town, Al Khafji, Mhm. which is Okay. on oil city, Kuwait border, very कम population, no international schools. तो वहाँ पे सारे subjects को अरबी में पढ़ाते थे. And my dad was like, यार, this is not gonna work in other countries, and rightly so. So he was like, यार मैं खुद ही पढ़ा लूँगा. And the way it used to work कि वो मुझे कोर्स वर्क पूरा पढ़ाते थे पूरे साल. And then we used to travel 300-350 किलोमीटर दूर दमाम सिटी होता था. वहाँ पे एक स्कूल था, पाकिस्तानी एम्बेसी स्कूल. वहाँ जाके आई यूज्ड टू राइट पेपर्स, फाइनल पेपर्स, फाइनल एंड मिड टर्म, इस तरह साल में 2 दफ़ा आई गो देयर. वैसे homeschooling में मैं यार your parents have to be very organized, ठीक है? क्योंकि
अब आपको अपने स्कूल टाइम में बच्चों को पढ़ाना, लाइक योर पेरेंट्स दे वेक अप एट लाइक 7 AM, लेट्स से जो स्कूल टाइम होता है 3 बजे तक पढ़ाना, या तो फ्लेक्सिबल होता है होम स्कूलिंग में? यार आई थिंक माय स्कूलिंग फ्रॉम दैट टाइम लाइक कंप्लीटली मेसी, लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं था। और ऑनेस्टली करिकुलम वगैरह भी कोई ज़्यादा जो है फॉलो नहीं किया। आई वाज लाइक वेरी नॉटी एज अ किड, सो लाइक माय मॉम गिव अप ऑन ट्राइंग टू ट्राइंग टू टीच मी। तो अब्बा ही पढ़ाते थे, और वो जब वापस आते थे काम से तब वो पढ़ाते थे, तो उनके पास कितना ही कोई टाइम होता था। तो हुँ। मेनली व्हाट ही डिड वाज लाइक, आई मीन ही वाज अ स्मार्ट गाय, सो उन्होंने ये शॉर्टकट किया। उन्होंने कहा यार मैथ पढ़ाऊंगा और इंग्लिश पढ़ाऊँगा, और बाकी सारी चीज़ें वो ही वुड जस्ट गिव मी लाइक गेट मी बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज़, एंड जो भी मेरा दिल करता था वो मैं खुद ही पढ़ता था। तो इस तरह का कुछ सेटअप था, और या 10-12 साल तक यही था। ठीक है, फिर वापस आ गए कराची, फिर? फिर कराची आया, पहले दिन गया स्कूल, और पहले दिन हो गया बीमार। स्कूल में जाके यू नो वो मैंने देखा कि यार ये क्या सीन है। इतने सारे बच्चे इतनी सी जगह पे। कौन सी स्कूल है तुम्हारा? यार स्टार्टेड एक स्कूल था फैल्कन हाउस। तो हम लोग रहते थे नॉर्थ यप। नाजिबाद में। हुँ, वहाँ पे एक स्कूल होता था हुँ। फैल्कन हाउस, वहाँ पे स्टार्ट किया। और वहाँ पे जो है वो ज़ाहिर है पहले दिन जो गया तो इतने सारे बच्चे, और किताबें और पीरियड्स हो रहे हैं, और इतना स्ट्रक्चर्ड, लाइक मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं किया था, तो इट मेड मी सिक। एंड देन डिड टेरिबली इन माय फर्स्ट ईयर एट स्कूल, लाइक मिड व्हिच वाज़ फेल करके। ग्रेड 6? 6, ओके। 6। हुँ। अम, और उसके बाद फिर फाइनल्स में जो है वो भी पूरा किया, थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुई। फिर उसके नेक्स्ट ईयर से देन आई फिगर्ड आउट, आई एम लाइक ये तो एक्चुअली ज़्यादा आसान है। तो देन लाइक ओके। स्टार्टेड डूइंग वेल, अब दोस्त वगैरह भी बनने शुरू हो गए होंगे? दोस्त बनना शुरू हो गए, थोड़ा सोशल सर्कल बन गया। देन आई वाज़ लाइक यार ये तो मज़ा आ रहा है। तो आप रोज़ाना दोस्तों से मिल रहे हो। यू नो और पहले तो ये होता था कि यार दावतों पे जा रहे हैं तो मिल रहे हैं लोगों से। अब ये कि यार रोज़ाना ही you're hanging out with friends. So it was good. And then फिर 12 से लेके फिर देन डिड माय ए लेवल्स एट सेंट पैट्स कराची में। वहाँ से पढ़ा, और उसके बाद आई अज़्यूम यू फिर वर अ वेरी स्टूडेंट ओए लेवल्स में? आई वाज़ ओके, या आई वाज़ नॉट बैड। या अच्छा ही यार था। ये ना बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हाँ, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। यही वही वाला है। यार ओ लेवल्स तो आई थिंक इतना मुश्किल होता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओ हुँ, लेवल्स तो हुँ। यार वाज़ नॉट बैड। एंड देन ए लेवल्स में आई वाज़ एट व्हेन आई गॉट इनटू पैट्स, पैट्स के अंदर तो बड़े तेज़ लोग होते थे। तो वहाँ पे आई फेल्ट कि यार वहाँ पे मैं हम्बल डाउन हो गया। टू बी ऑनेस्ट उतने ज़्यादा तेज़ लोग मुझे कहीं और नहीं मिले, जितने ओके। सेंट पैट्स में मिले। सो तो अब मैं यही कहता हूँ कि यार हाँ, ठीक था। इट्स गुड एनफ टू गेट इनटू सेंट पैट्स एंड स्टडी विद those like really smart kids. Uh, but not so good कि यार मैं कहूँ कि यार मैं चीता था। um, I'd say. ओके, Uh, फिर so व्हाट केम yeah, नेक्स्ट? उसके बाद फिर A-levels वहाँ से किया, उसके बाद फिर आ गया मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के लिए अंडरग्रेड McGill से। Um, this is very long time ago. Um, किस चीज़ में अंडरग्रेड किया? मैंने किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके, Yeah, ओके, yeah. इंटरेस्टिंग। So funny enough, I actually wanted to study math. ओके। Um, बट मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। उसने कहा मैं भी मैगिल जाऊंगा, हम दोनों साथ चलेंगे भाई भाई। मैं कहा चलो ठीक है, फिर मैं भी करता हूँ। फिर देन 1 साल के बाद मैंने अप्लाई किया वापस, ट्रांसफर टू मैथ एंड फिजिक्स, जो हो भी गया मेरा। फिर माय डैड वाज लाइक यार तुम प्रोफेसर बनना है? मैंने कहा नहीं, मुझे प्रोफेसर नहीं बना। तो मैंने कहा तो फिर क्या, इसमें तो बहुत पढ़ाना पड़ेगा लोगों को। तो मैंने कहा हाँ नहीं, मुझे पढ़ाने का शौक नहीं है। तो मैंने ड्रॉप कर दिया वो आइडिया में, फिर मैंने इंजीनियरिंग ही की। सो या लाइक आई वाज़ देयर 5 साल लगाए इंजीनियरिंग में, बीच में 1 साल इंटर्नशिप। हाँ। फर्स्ट इंटर्नशिप वाज़ एट ब्लैकबेरी, जो कि उस ज़माने में रिसर्च इन मोशन होती थी। जैसे ही मैंने जॉइन की वो कंपनी डाउन होना शुरू हो गई। अ, सो फिर हम उसे कहते हैं रिसर्च इन स्लो मोशन। ओके। और
तो वहां से स्टार्ट हुआ, बट या वहां से मैंने डिसाइड किया कि यार टेक इज बेसिकली लाइक आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, और And यही in what करना है. year was this, Maz? So I was at Blackberry Research in Motion 2012, but I started university, my undergrad in 2009. Okay. So 2012 में Maz, obviously, do you think you in tech right now, like BlackBerry or your internship, it played a major role? क्योंकि obviously you just told me कि यार वो tech का एक वो पैदा हुआ कीड़ा कि यार tech में जाना Hmm. है, और 2012 में तो tech का तो इतना वो था ही नहीं, especially amongst us Pakistanis, और even in, I think globally इतना ज़्यादा नहीं था जो 2015 2016 onwards मुझे लगा, personally मुझे लगता है कि हुआ है. What do you think? What are your thoughts on it? Yeah, I mean for me like actually जो मेरी पहली internship थी वो इस सॉफ्टवेयर में नहीं थी, वो it was a very different role. हाँ. And BlackBerry used to hire at that time 300-400 बच्चे like co-op or interns, like every 4 months basically, 4-4 हाँ, महीने हाँ. की वो terms होती थी. तो व्हेन आई गॉट देयर एंड आई सॉ कि यार जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो बच्चे हैं जो कोऑप्स हैं, उनका तो यार आई मीन दे आर लाइक हॉट कमोडिटी, लाइक प्रीमियम लोग हैं ये लोग. Okay. इनके पीछे जो है वो सारे मैनेजर्स भी भाग रहे हैं, और ये जो काम कर रहे हैं वो लाइक बहुत ही हाई टेक है, काफी लाइक इंटरेस्टिंग है, मुश्किल है. मैं क्या यार मैं क्यों नहीं कर सकता ये. तो मैंने एक्चुअली मेरी 1 साल की इंटर्नशिप थी. 4 months into it I applied for a transfer to a software development role. हाँ. मैं इतना इंस्पायर हो गया वहाँ से, और फिर मैंने वो किया, और फिर मैंने कहा यार अब तो यही करना है क्योंकि इसमें मज़ा आ रहा है. तो I'd say like yes, I mean before I got into it like मुझे वो एक थोड़ा-सा वो मिला वहाँ पे माहौल, और एक्सपोज़र क्लोज़ली देखने का कि चीज़ है क्या और करने का, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट काइंड ऑफ ड्रोव माय इंटरेस्ट into the area. So you're Got right, it. yeah. Yeah. And BlackBerry के बाद 1 साल की आई थिंक पढ़ाई रह गई होगी, सो ग्रेजुएट हो गए मिगिल से 2013 आई अज्यूम. इसके बाद 14 तो 2014 में 24. ग्रेजुएट हो Yeah, गया. yeah. Uh-huh. Then moved to Toronto, Mississauga specifically, Uh-huh. और start my career at Citibank. Citibank के उस जमाने में Citibank. एक वो न्यू ग्रेड टेक रोटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. Okay. तो got a job there. And yeah, that was great. They invested a lot in those like new grads. उन्होंने काफी ज्यादा हमें Uh-huh. like trainings करवाई, वो सारा कुछ. Or but it was a different kind of tech. It was not like bleeding edge of tech. It was more like financial technology. But it was fun. I did like other banks after, so kept doing that for a bit. And so banks वगैरह की, और फिर your tech, basically जो tech firm है, actual tech firm में जब गए, I think was Mhm. that Amazon first or was it like a startup? Yeah. So this is interesting क्योंकि असल में हुआ ये कि I was at Citibank and it was like it was a good entry into this space, like um वहाँ पे सीखा काफी कुछ. वहाँ पे मैंने काम किया. I think I worked there for like 15 months and then I got like another offer from Bank of America, which is also in Toronto. वहाँ पे काम किया and then Scotiabank में काम किया. That short periods. Um, उसके बाद but then I like realized like this is in 2017. I realized yeah, this is not the bleeding edge of tech, and because I was doing like well in that environment, and it didn't feel like a lot of effort. So I was like not getting challenged. So then I started applying to startups, and जब मैं startups में गया तो फिर मुझे पता लगा कि कितने पानी में हूँ, क्योंकि in a lot of places I was failing Uh, interviews, और वो मुझे लेवल डाउन कर रहे थे. तो मैंने कहा यार इसका मतलब ये है कि असल स्किल डेवलप नहीं हुई है. तो देन uh, आई जॉइंड फंड थ्रू व्हिच वाज अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप एट द टाइम. 15 लोग थे और मैं तीसरा डेवलपर था उधर. मैंने वो ज्वाइन किया एंड लाइक आई uh, टुक लाइक हाफ 50% पे कट एंड like 2 titles down to do that. But like at uh, that time, like I was obsessed कि यार सही तरह like I need to learn this, like how to build a product, how to do these more difficult things. Need to put myself in a difficult situation. So I would say like uh, that is my
first like real tech job. And that was a very bold step because 50% salary cut lena, it's not an easy job, right? It's not an easy thing. Yeah, I mean, डर लग रहा था कि यार ये क्या कर रहा हूँ ये मतलब and you know like a lot of people said कि यार ये क्या कर रहे हो हमारे पास ऑफिस भी नहीं था we were working out of a kitchen और at that time like it was risky but you know I was young and I always thought कि यार अब नहीं तो कब तो मैं कहा यार अब कर लेते हैं बाकी देखी Hmm. जाएगी बात के बाद में but honestly I think that was like the turning point that was the right step in hindsight. और उस स्टार्टअप में कितने साल काम किया? यार उधर I was there for about 3.5 years. Like that was like the longest job that I didn't get bored of easily. ओके. And I kept growing क्योंकि like you know company भी बड़ी होती गई funding rounds होते गए और product evolve होती गई. So you know I felt challenged throughout. And then that brings us to 2020 when COVID आ गया and Toronto went into lockdown Hmm. in a Yes, big way. And I think you were here as well, right? Toronto में ही थे आप भी उस वक्त. I was there. Yes. Yeah. So yeah, 2020 में then like I left Fun Through and moved to Dubai. So that was like another very big drastic step that I took. So that was a major pivot. तो Mhm. क्यों हुआ ये decision from Toronto? अच्छा, a lot of people, especially in the West, they even now they aspire to go to the Middle East. Let's say पहले Mhm. दुबई था कि यार वहाँ पैसे बहुत हैं इस वजह से, and obviously it's closer to Pakistan home. And now it's Saudi Arabia. Again, पैसे Yep. बहुत हैं and it's closer to home. Yep. आपका क्या reason था? Was it home? Was it Dubai? Was it money? What was it? Yeah. So money तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैं जिस Hmm. स्टार्टअप में गया था वो उसका फंडेड भी नहीं थी. एंड लाइक 2 Okay. महीने मुझे लाइक पेचेक भी नहीं मिला. और अपनी टिकट भी मैं खुद Okay. ही खरीद के गया था और Hmm. it was just an idea. I think there are two main reasons. I'd say three main reasons. One was I wanted to be a part of a founding team at a startup and do like the Hmm. 0 to 1 journey. So that was one motivation. The other one was my dad. My dad was in Karachi at that time. He's not very well, and I wanted to be Hmm. close to him. So that was like a you know family thing. Um, and I'd say जो तीसरी चीज थी वो ये कि टोरंटो में कोविड like came really hard. Lockdown Hmm. was super hard and honestly I was like bored. I was like यार तो मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे कहीं like you know I need to go somewhere where business as usual and you know I'm young and it feels like a waste of a year. It felt like a waste Hmm. of a year and like Hmm. cannot do like another year like this. So I'd say like those are the top three reasons why I moved to Dubai. Um, yeah. Yeah. Before we obviously explore your journey in Dubai, वो स्टार्टअप का क्या हुआ जो छोड़ा था 2020 में? Fun too. It's still around and they're doing well. They've not had an exit yet. Okay. Um, but yeah, it's slowly like brewing. Hopefully, like one day there'll be an exit and I'll make some money. Okay. I keep my tabs on them. Every now and then मैं उनको Okay. मैसेज करता हूँ कि यार क्या सीन है, how are you guys doing? But yeah, अभी तो they're still around. Okay. And so Dubai में experience कैसा था? Firstly, like how did you find Dubai compared to Toronto? Hmm. So I have a lot to say on that topic. Um, I'd say like infrastructure wise, quality of life wise, like really great. Weather amazing, like 8 months. I would say 8 to 9 months of the year, a very pleasant, मजे का like weather. आप बाहर जा सकते हो बगैर सोचे समझे. You don't have to check your weather app. Um, or very clean, amazing infrastructure, great food. You're by the beach, so in you know all those ways, really great. Um, but the one thing that um, I felt, which is to me is the most important thing, जिसमें मुझे लगता है कि टोरंटो आगे वो है the quality of people. Um, so
In terms Yeah, of and their intelligence or in terms of how they are as a person? Like, किस तरह? Or a bit of yeah, I both? mean, like, I think it's a bit of both. I I would like to not comment on anyone's intelligence, but I think mainly it's just like it's a very like artificial, like मसनूई जगह है। तो Mm, उसी तरह के लोग अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे। सो लाइक बेसिकली लाइक एक आर्बिट्राज है, राइट? लाइक आपकी स्किल्स जो है, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में है एंड यू आर लाइक क्या मैं दुबई जाके ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, तो मतलब आप यू आर नॉट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट यू कैन क्रिएट। इट्स जस्ट दैट कि एक और जगह है जहाँ पे आपको वो ज़्यादा वैल्यू करे। तो उस तरह के लोग मैंने देखा है जो ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे, जो दे आर मोर लाइक ड्रिवन बाय कि यार व्हाट दे कैन गेट आउट ऑफ अ प्लेस वर्सेस कुछ लोग होते हैं जो वांट टू प्रोड्यूस वैल्यू एंड अप लेवल एवरीथिंग अराउंड देम। mhm. So it's full of people like those. But I think mainly like जो मेरा turning point था, like turn off था from Dubai was just like the racial discrimination and the modern day slavery that like I saw firsthand in Dubai, which then kind of like made me Did you feel a experience little that in your startup as well, or या सिर्फ generally जब बाहर जाते थे तो experience किया? नहीं स्टार्टअप में तो ऐसा नहीं था। But like like Dubai is built on the backbone of these um, the labor workforce that they are able to import from the neighboring countries, right? And I was able to visit one of the labor camps there while I was there. We were doing like this iftar drive Ramzan में, और वहाँ जाके जो है ना I was like Mhm. man like this is brutal, ये तो काफी बैड चीज़ है। और वो देख के जो है ना I was like यार this is the big difference between Toronto, let's say, and Dubai. So that was a big turn off for me personally. I kind of agree because I think जो हमें दिखाया जाता है दुबई के बारे में, इट्स एक बहुत ही ग्लैमरस लाइफ दिखाई जाती है, ठीक है? बट व्हेन आई वेंट टू दुबई फॉर अच्छा, और जब हम लोग वेकेशन के लिए जाते हैं ना, हमें लगता है यार यही जगह है रहने की। बट आई थिंक इफ यू गो फॉर वेकेशन समवेयर कंपेयर्ड टू इफ यू स्टार्ट लिविंग देयर फुल टाइम, बहुत फ़र्क आपको फ़ील होता है। Okay. और वो कहीं भी हो, दुबई में हो, न्यूयॉर्क में हो या टोरंटो में हो। और मैं दुबई में गया तो मैं आई स्टेड देयर फॉर लाइक 4 डेज़ एंड आई जस्ट फेल्ट दैट मैन दिस इज़ सो फेक कि यार Hmm. यहाँ पर obviously I did not interact with like a lot of people you work there, but generally जो feel आ रही थी ना was very artificial, Hmm. like similar to what you said. Yeah. Yeah, that's how it is. I mean, it's great for vacation. I mean, अगर आप, you know, and different people like I, you know, I admire people जिनकी like बड़ी clear motivations होती हैं, clear goals होते हैं life में। I guess like मेरे नहीं थे उस time पे। Mhm. Um, but yeah, like if you want to enjoy the luxuries of life, आप वहाँ पे लाइक कुक रख सकते हैं, लाइक पाकिस्तान में जिस Mhm. तरह की लाइफ आप कर सकते हैं। Yeah. Hmm. So you don't have to like do those things that you do in Toronto. But there is a reason Mm. for it. The reason is because there is a system of labor that they have built, और जिसकी वजह से जो है वो ये चीजें पॉसिबल है। Tomas, if you get an option today, would you move to Dubai? या नहीं? यार you know in short, no. but but with ifs and buts, I mean, it depends on the option. Mm. Of course, like if I get the opportunity to be able to work on anything that I like, or the frontier of tech, and it enables me uh, to do that, then maybe I would consider it. But I don't think so. Like overall, like high level, मुश्किल है बड़ा। Mm. I understand. Yeah. So after कितने साल दुबई में रहे हो? I was only there for 2 years. 2 जिसमें I years. actually worked for two different startups. Okay. तो पहले में इतना मज़ा नहीं आया तो फिर दूसरे में चले गए। Yeah, पहले में I was there for a year. The one that I joined, जो like just which I was a part of the founding team of.
Was there for a year. I guess, like, I mean, the founding team was assembled like from different places, and we had not like met each other, worked with each other prior to that. तो जब हम वहाँ गए तो फिर हमें समझ लगा कि यार, you know, we are not like gelling well together. So like Hmm. after a year, basically other than the co-CEOs, the दो like original founders थे, बाकी सारे like we were three other people like marketing, COO, and then I was doing tech. We left. And then I joined a Pakistani startup actually, but I was working out of Dubai. So एक साल फिर मैंने Pakistani startup and even like worked out of an office in Karachi. Uh, How was that? काफी ज़्यादा. That was great. That was Okay. like one of the best work experience of my life, I would say. किस सेंस This में? was a startup. यार एक तो ये कि पाकिस्तान के तरीका है बिजनेस का, पाकिस्तान के लोगों को क्या चीज़ें टेक में समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, अपने लोग, तो वो मज़ा उसका अलग है, हाँ. उनके लिए चीज़ें बनाने का. That was great. I think the team that I joined was like super cool. बहुत ही fit लोग थे. This was Credit Book, by the way, the name of the startup. Um, and उनके साथ काम करने का बड़ा मजा आया. And then lastly, I met so many like super ultra crazy talented people there. जो मैं भी सोचता हूँ कि यार ये लोग बहुत ही तेज थे ये लोग. तो वो स्टार्टअप का अभी क्या हुआ? अभी कहाँ है? Is that still around? That one is still around as well. They have not raised a round in a while, so I'm assuming that they're like somewhat profitable, or being able to pay their bills. Okay. But yeah, like when I joined, it was like that's when after I joined, like a month after I joined, we landed like our first, I guess, serious round of funding. At that time, which is quite sizable for like the Pakistani startup scene. Yeah, it was like I had a blast there. और कराची में काम करना भी मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि I grew up there, like I never really work there at all. So वो एक ख्वाहिश थी, वो भी पूरी हो गई. तो फिर जब पाकिस्तान काम करना शुरू कर दिया था, तो व्हाट मेड यू डिसाइड कि यार जाना है मुझे वापस? Honestly, कोई प्लान नहीं था. बाय द वे सारी मूव्स जो है ना वो वेरी अनप्लान्ड. कोई चीज देयर वाज समथिंग दैट केम इन फ्रंट ऑफ मी एंड देन लाइक मैंने इवैल्यूएट किया, मैंने कहा यार कर लेते हैं, इस तरह ही ये सारी मूव्स हुई. um I think वहां से ये हुआ कि देन माय मैनेजर हु आई यूज्ड टू रिपोर्ट टू एट फंड थ्रू, जो मेरा टोरंटो वाला स्टार्टअप था, ही जॉइंड Amazon. And he was like, यार तुम उधर क्या कर रहे हो, तुम इधर Okay. आ जाओ. तो then I was like, Mhm. अच्छा. तो जो उसने मुझे बताया जो कर रही थी टीम, you know, I was like, यार ये तो इंटरेस्टिंग काफी लग रहा है काम. And at that time honestly I had no intention of leaving that like credit book. But then my former manager, he convinced me, he's like, यार, you know, like interview तो करो, like it's not easy to get through the interview. So why are you thinking that I'm offering you the job? You need हाँ. to first go through the rounds, and then if you get it, then we will talk about it. तो मैं कहा हाँ ये भी बात सही है, like पता लग जाएगा Got it. कितने पानी में है. So then I interviewed, and then lo and behold, like I actually did get the offer. Uh, and then like I told my wife उससे एक साल पहले मेरी शादी हुई थी. मैंने उसको कहा कि यार ये आ गया हाँ. तो मेरी बीवी ने कहा यार अभी तो मुझे दुबई लेकर आए हो और अब तुम मुझे कह रहे हो कि वापस कनाडा चलो. Like very unstable. So fair, but then one thing led to another, and you know we decided, okay, you know we were also thinking of like having like raising a family, and we had more family in Canada, and there were other reasons. Amazon, I think, was also like doing some really cool stuff. Um, Uh-huh. um, I felt I would be learning more at Amazon. Um, so yeah, at the end, like I decided. और फिर मैंने यही सोचा कि यार मैंने रहना तो है नहीं दुबई, because I, you know.
I had made up my mind कि 2-3 साल में तो I will definitely go back. So it's like this is a good opportunity. 2-3 साल बाद क्या situation होती है? Uh-huh. Now we are like in this AI world. In hindsight, I think that was also a good call. Came back at the right time. And you worked in Amazon for about 3 years. 3 years, yeah, exactly 3 years. Um, yeah, that was And a great, now you are good in 3 years. New York working for Meta. That's right. Yeah, yeah, yeah. Okay. ये step क्यों लिया? So ये स्टेप में ये भी मतलब लिया नहीं हो गया. um, इस तरह हुआ कि I got headhunted basically by Meta. Okay. Um, and again went through the interviews. I mean with these type of uh, not offers but like invitation to interview, I guess like you you want to see like yeah, like where you are. So you know आप जाते हो आप इंटरव्यू करते हो तो वही किया इंटरव्यू दिया एंड इट्स लाइक अ रियली लॉन्ग प्रोसेस मेटा का स्पेशली and then when I got the offer I had the option to go to move to either New York or Menlo Park, which is San Francisco. um, and the one thing that I've not told you about me is that I always dreamt of living in New York. Okay. uh, so I'd been to New York many times before and I was like यार I used to feel like Karachi. I'm like यार कराची तो रहते नहीं है तो कराची से क्लोजेस्ट नॉर्थ अमेरिका में आई ऑलवेज फेल्ट कि यार न्यूयॉर्क जो है ना कि वो भरा हुआ है, रश है, क्राउडेड है, ट्रैफिक है। गंदगी है, पोल्यूशन है, लोग चीख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सड़क पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, सही है। वो सारी चीज़ें जो है ना वो न्यूयॉर्क में मुझे और लाइक 24/7 खुला हुआ है। हाँ, अम, जब मैं मॉन्ट्रियल आया था आई वाज़ लाइक यार ये क्या बकवास है, 7 बजे सारा कुछ बंद हो जाता है यहाँ पे 8 बजे, 9 बजे। हुँ, एंड लाइक लाइक यू आर फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम कराची, वी नो 10 बजे तो वी कॉल फ्रेंड्स के यार कुछ करना है। या शादियों में 12 अ, बजे तो खाना मिलता है। 12 बजे खाना मिलता है, एग्ज़ैक्टली। तो वो न्यूयॉर्क कराची के अलावा न्यूयॉर्क वो वाहिद जगह थी जहाँ पे मतलब वो वाला सीन था। तो मैंने कहा यार न्यूयॉर्क इज़ ग्रेट। एंड देन ऑफ कोर्स लाइक आई मीन द ऑफर वाज़ गुड, द रोल वाज़ ग्रेट, लाइक ऑल दोज़ थिंग्स कंबाइंड। Um, and I think like Canada में also like I was a bit fed up to be honest by like the tax situation. You know, that like I Isn't it the same in New York? so New York may be high tax. That's true. Is it? But not as much as it is in Fair Canada. enough. But Yeah, what about not healthcare? as so healthcare actually better हो गई हमारे यहाँ पे न्यूयॉर्क में आके क्योंकि No, better as in, what about the insurance premiums that you guys have to pay, or I assume your company covers it for you entirely? yeah, so that's the thing. Like the company covers it for us, so we don't Okay. feel it. And depending on the company, which at Meta has like one of the best healthcare Mhm. insurances probably in the country. Like I think very few other companies have like the type of insurance that they provide. Um, so like we basically got like an upgrade in healthcare. Like फॉरेन डॉक्टर मिल सकता है आपको, फॉरेन आप सर्जरी करवानी 10 है, घंटे फॉरेन वेट हो नहीं करना। जाएगी, कोई वेट नहीं करना है। एंड आपके पास चॉइस है, कहीं पे भी आप जा या सकते हो, किसी भी डॉक्टर से। लाइक कनाडा में तो डॉक्टर्स के पास जाओ आप तो ऐसा लगता है कि यार आप उनसे लाइक फेवर माँग रहे हो और और वो पूरा दिन आपके गया ऊपर आपका। पूरा दिन गया। आप डरते हो यार, आप कहते हो यार कोई बात नहीं, सही है, नहीं चल रही टाँग कोई मसला नहीं है। हाँ, चला अभी लेंगे। डॉक्टर पे जाऊँगा और खराब हो जाएगी मेरी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। I mean, I kid you तो not, I wanted to get an appointment for my nose. मुझे चेक करानी थी, मुझे अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद का मिला। Yeah, ऐसे but जी, जी। so my I guess like turning point was कि I tore my ACL in 2021. हुँ, 2022 में मैंने खैर 1 साल मैंने खुद डिले किया, I was in Dubai and all, वो सारा कुछ हुआ। But जब मैं आ गया वापस कनाडा, um, I went to my family doctor and I was like, yeah, this is my problem. And I'd already done MRI in Dubai, so I knew that हुँ, ACL is torn. Like, नहीं, we हाँ, don't believe in ये दुबई का MRI, we will do another MRI.
सो एमआरआई पे मैं लाइन में लगा, 4-5 महीने बाद मेरा एमआरआई हुआ। उसके 2 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया। उसके बाद फिर मुझे एक सर्जन की अपॉइंटमेंट के लिए मैंने 6 महीना वेट किया, और उसने फिर मुझे इनकार कर दिया देखने से। हम्म। फिर मैं एक और सर्जन के पास गया, उसने मुझे देखा और उसने कहा यार अभी सर्जरी नहीं हो सकती, अभी तुम चले जाओ 6 महीना और इसके ऊपर एक्सरसाइज करो। मैंने कहा यार व्हाट व्हाट डू यू वांट, कि मेरी सर्जरी कर दोगे, क्या लोगे? उसने कहा यार, उसने मजाक में कहा, उसने कहा यार टांग हाथ में लेकर आ जाओगे तो कर दूंगा। तो 3 साल मैं जो है ना वो रुलता रहा, फिर मेरी सर्जरी हुई। Yeah, I mean, a lot of people they just fly back home यार पाकिस्तान जाके मैं करा लेता हूँ वहाँ मेरा काम जल्दी हो जाएगा. एग्जैक्टली, पाकिस्तान में मैंने मेरे कजन की एसीएल सर्जरी हुई, उसने मुझे बताया, उन्होंने मेरा एसीएल ठीक कर दिया और एमसीएल निकाल के फेंक दिया। मैंने कहा फिर एक काम करते हैं, रुक ही जाते हैं यार, यहीं से ही करा Yeah, लेते हैं। सही. तो you dreamt of living in New York, so as you're enjoying it, having fun. But अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई दैट मेटा इज़ लेइंग ऑफ 16,000 एम्प्लॉइज़. तो अच्छा अभी ना आजकल जो भी इस तरह काम कर रहा है, ठीक है? स्पेशली इन द टेक वर्ल्ड और जो टेक वर्ल्ड में होता है उसके 2-3 महीने बाद बाकी सारी कंपनीज़ में भी इम्पैक्ट आता है कि यार वो दे हम्म, फॉलो द टेक कंपनीज़ राइट? बी इट लेऑफ्स, बी इट रिटर्न टू ऑफिस, बी इट वर्क फ्रॉम होम कुछ भी हो, ठीक है? अभी न्यूज़ आई, तो जब इस तरह की न्यूज़ आती है कि यार 2 दिन में अनाउंस होना है लेऑफ्स 16,000 ठीक है? सो दैट्स बिग नंबर राइट? दैट्स 16,000 फैमिलीज़. तो डू यू पर्सनली फील स्कैर्ड कि यार ये क्या हो गया या डू यू हैव कॉन्फिडेंस यार मुझे तो नहीं निकालेंगे? यार डेफिनेटली आई डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि मुझे तो नहीं निकालेंगे। सो अच्छा व्हाट ऑन अ यू नो स्केल ऑफ 1 टू 10 कितना है? कितने कितना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है ऑन अ स्केल ऑफ 10 with 10 being like the highest? um, yeah, because I'm new at Meta, so I think हाँ, like I'm more at risk. So I would say like it's like at this point like it's like more like 6-7 कि मुझे नहीं निकालेंगे. But if I was at ओके. Amazon, for example, I would have said my answer would be different. You know, I was there for like 2-3 साल. बट अमेज़न में Genuine, हायर होता लाइक 10 पे होता और 9-10 होता क्लोज टू yes. कि नहीं, 9-10. मैं को मसला नहीं है. But was the Uh, fact that अभी Amazon में like there were people who were laid off after like 15, 20, 25 years of experience as well. Similarly in Meta yeah. शुरू अर्ली ग्रेजुएट्स भी जाते हैं न्यू ग्रेजुएट्स भी जाते हैं और एक्सपीरियंस्ड हायर्स भी जाते हैं, ठीक है? तो डू यू थिंक परफॉर्मेंस इस तरह के मास लेऑफ्स में रियली मैटर्स और इज़ इट कि यार पूरा जैसे अभी मेटा का रियलिटी लैब्स, चलो भाई हम बंद कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉइज़ जा रहे हैं, जो टॉप 5% है ऑब्वियसली हम इनको इधर-उधर दूसरे डिपार्टमेंट्स में डालेंगे, बाकी सारे लेट्स से वो नहीं. फारिग होंगे। तो डू यू रियली थिंक कि इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है या किस्मत है? और इट्स अ बिट ऑफ बोथ? Yeah, it depends. It's a bit of both. Like it depends on like which wave of layoff किस तरह organize की उस company ने. जैसे Zuckerberg ने last year जो layoff किया था, उसने सीधा सीधा press में जाके कह दिया था कि you know like this is all like we're getting rid of people who do not हुँ, meet our bar. या, So that was like definitely performance driven, right? Um, अब of course like this is like the reality as well. This is a different type of layoff because it's like there is a org, there's no need for that function, and they're actually हुँ, absorbing those people in other areas. So generally like if you think about it from like C level perspective कि how you know like they want to shave people off, improve the bottom line. They think of a few things. They're looking at like what are the business critical functions, हुँ, what are the cash cows, like कौन सी टीम से like पैसा जो है वो बन रहा है, और हाईली ऑप्टिमाइज एफिशिएंट है, जिसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल इन आवर वर्ल्ड रेवेन्यू पर डेवलपर कहाँ पे ओके, ज्यादा है, लाइक आपके पास पूरी कंपनी का मैप होता है, ये चीजें आप देखते हो, आप उनको यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम, एंड देन यू लुक एट ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस के यार कौन से लोग हैं जो कि यू नो वी वुड probably get rid of them in 6 months or a year. So why not हुँ, just pull the trigger and save everyone, the work and the hassle. So I would say like in that order, people look at it. Um, the the C levels, but then in the हुँ, leadership chain, a lot of information is lost. So it's not like everyone and anyone who's laid off, he was working on things that were not important, or
was not performing well. Sometimes like people who are performing really well and on important things also get laid off. Mm-hmm. So then that's like the last 10-20% bucket of people that just are unfortunate and uh, And when such a massive layoff happens, like how is the morale in the organization? Because अब next thought ये होगा कि यार next हमारी बारी है. यार ये चला गया, ये मुझसे yeah. थोड़ा कम बेहतर था. अगली बारी मेरी है because जो अगला बंदा है वो मुझसे बहुत बेहतर है. इस तरह का बंदा सोचता होगा, कंपेयर करता होगा अपने आप को दूसरों से. Yeah, the anxiety is at all-time high in the company. So how are My people working, team, right? The fact that they're saying it's all कि यार to create efficiency, but लोग efficient कैसे होंगे जब इस तरह anxiety होगी लोगों को? yeah, that's a good question. And I used to think that too, but like, man, humans are capable of doing like remarkable things. Um, and like you have this carrot dangling in front of everyone, and people are just chasing that carrot. And उसमें बस यही है कि you know, बल्कि to be very honest, like I'm actually noticing कि लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं. So it is डरे very interesting. It is very interesting. Dar is Dar can be a motivation too, very effective one. And I feel like at least in the short run, that's what I'm saying. हाँ, Um, you just have to create the right system. I think with Meta, um, I think their comp is like really good. It is very difficult to say like, oh, I want to go somewhere else because you're definitely most likely going to take a cut. And the comp is very aligned and incentivized like via a performance. Um, so generally, like the culture is very performance driven. Like you हाँ. do more, you get rewarded. And so people who survive and have been around and join Meta are basically already have that type of mindset. Okay, yeah, we're here to perform. Crazy. अच्छा माज Yeah. नेक्स्ट बात करते हैं हम एआई की राइट सो थोड़े टाइम पहले एआई वाज अ बज़वर्ड बट नाउ ऑब्वियसली एआई हमारी Mm. जिंदगी में आ चुका है ठीक है लाइक हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट्स टू एआई बिकॉज़ द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग मैं अपने पॉडकास्ट के जब काम कराऊंगा ऑन द थंबनेल डिस्क्रिप्शन आई विल बी यूजिंग एआई ठीक है तो दीज आर जस्ट लाइक बेसिक एग्जांपल्स राइट सिमिलरली और बहुत सारी चीजें लाइक लेट्स से चैट जीपीटीज और मेटा का क्या है लामा आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स Llama, कॉल्ड Meta AI, yeah. Meta AI, right? Or Claude or Gemini. I think these are all like great tools, right? You are in this system, right? And I assume you're working on it in one way or the other. किसी ना किसी soft की काम करोगे to make it even better, right? Yeah. What are your thoughts? के थोड़े early 2000s में एक आया था .com bubble था जो eventually crash हो गया. Initially लोग कह रहे थे यार ये भी AI bubble है. But the fact that it's providing so much value to people I personally don't think it's a bubble anymore. Like it's a real thing, right? So what are your thoughts on it? Yeah, I mean, I'm aligned with you. I don't think it's a bubble at all. In fact, I think it is probably like one of the biggest step function changes when it comes to like human advancement. Just like Mhm. electricity was one, and then you have semiconductors, and then you had like computers, then you had internet, and then maybe touchscreen Smartphones. Yeah. smartphones, throw that in somewhere. And I think this is probably bigger than all of those, I feel. और उनकी जो इफ़ेक्ट था वो 10 साल में रियलाइज़ हुआ, 15 साल लगे उसको ब्रू होने में, उसको फैलने में। इसका तो बहुत ही तेज़ होगा। हो रहा है। Mhm. Because it is सेल्फ हीलिंग, इट इज़ जस्ट लाइक एक बड़ा ही इनक्रेडिबल लूप है जिसके अंदर लाइक इट सेल्फ फीड्स इटसेल्फ टू लाइक कीप इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूविंग. And so the speed is like incredible. And so I don't think it's a bubble at all. In fact, I So think you think, sorry, you think it's not overhyped and we should not underestimate it. if anything, I think it's underhyped. That is Even my now, opinion. okay. Yeah, I think even now, I think it's underhyped. Because I think like I still feel like a lot of people are not like tinkering with it or have, like most of the people that I know spend very less time with AI, and their main AI use is through chat GPT.
which is like For a now, chat yes. interface for now. Mm. But the tools that I'm seeing, the things that, are going to be, released and launched and will spread like wildfire in the next year or two. I mean, they're going to change the way we work, the way we do anything. We'll have to rethink a lot of our systems, a lot of the things that we're used to doing. We'll have to unlearn a lot, and that is, I think, the unnerving part for people. वो इसलिए भी थोड़ा सा हाँ, resist भी कर रहे हैं. There's a bit of resistance कि यार, AI मैं करूँ यूज या नहीं करूँ, हमारी जॉब ले लेगा, ये ले लेगा, इस तरह की बातें मैं सुनता हूँ. But yeah, if you don't get on top of it, then yes, ले लेगा AI job. और ले ली हैं लोगों की। ले लिए हैं यार, या सैडली ले या। ऑफ्स हो रहे हैं. तो डू यू थिंक अगर अच्छा ये मुझे ये पर्सनली चीज़ समझ नहीं आती, बट आई विल जस्ट आस्क यू कि लेट्स से आई use AI for like a lot of my stuff, for a lot of my work. Let's say if I need to type an email, I just ask AI, ठीक है? लोग बोलते हैं यार खुद का सोचने का पावर तो चले जाएगा। तो मैं बोलता हूँ भाई अगर कोई मेरे लिए काम कर रहा है, इट्स अ टूल दैट्स देयर टू हम्म. यूज़। इफ एवरीवनस यूजिंग इट सो टेक्निकली वो मुझसे आगे निकल जाएँगे। तो मैं सिर्फ़ अपना दिमाग जो मेरा एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है उसकी और एआई ज़्यादा बेहतर है तो मैं तो पीछे रह जाऊँगा अगर मैं सिर्फ़ अपना दिमाग यूज़ करता रहूँगा और एआई यूज़ ना करूँगा। अपना दिमाग यूज़ करके एआई यूज़ करूँ सो दैट विल मेक मी इवन बेटर। बट जो Yeah. ये लोगों का जो कमेंट है कि यार खुद सोचो और एआई की वजह से पीछे रह जाओगे, खुद दिमाग कैसे यूज़ करोगे, हर वक़्त एआई थोड़ी होगा। मैं सोचता हूँ हर वक़्त एआई है अब। दिस इज़ द न्यू Mm. रियलिटी। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? Y- Yeah, I mean, like it's like saying कि यार आप अपने फल और अपना अनाज खुद नहीं क्यों नहीं उगा रहे, और आप खुद ही उगाएं और आप खुद ही खाएं उसको, और आपको नहीं अब ये करना आता. लाइक मुझे तो नहीं पता कि भाई किस तरह खाना बन रहा है, और बस घर में पहुंच जाता है. We go to हाँ, a grocery store and we like there's a system and it has just made these things easy. So I mean there is abstraction, right? Like for humans, like पहले like we were used to be farmers. हम उस लेवल पे काम करते थे. Then we were able to automate a lot of it and reduce the number of people that were required to generate the same amount of food there. And then we went on to solving bigger problems, and then further bigger problems, and to a point that now we have Google Maps for navigation. हुँ, We don't need like वो बड़े वाले जो पुराने ज़माने में वो जो हमारे अम्मी-अब्बू लेके घूमते थे मैप्स, और उसमें देखते थे यार कौन सी स्ट्रीट में अब राइट होना है, लेफ्ट होना है, और वो या, रियल टाइम अपडेट भी नहीं होता था. तो वी डोंट हैव दैट स्किल. एंड यस, लाइक हुँ। अगर गूगल के सर्वर्स डाउन हो जाएँगे तो हम स्टक हो जाएँगे. बट दैट बट पूरी व्हाट आर द दुनिया स्टक चांसेस ऑफ होगी दैट? ना, दैट्स फाइन। या एग्ज़ैक्टली. पूरी दुनिया स्टक होगी, और मतलब यू बेसिकली फाइंड बिगर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. या, You use your like of course, like you should not let go of your creativity and critical thinking skills, but do you necessarily have to apply it towards writing emails? I don't know. Is that the highest value of human brain? No, I don't think so. I think आप बहुत सारी और interesting काम कर सकते हो. टेक्निकली यू कैन सेव टाइम एंड डू अदर थिंग्स, राइट? Exactly, या, exactly. I think that is the right use of AI. Um, it does need someone on the steering wheel. By itself, like AI has no motivation. You have to like prompt it, like you have to ask it to do something. हुँ, And then it also does not have any incentive system to um, be good at it. So you have to make sure that it's doing the right thing and verify what it's doing. Um, my guess is that eventually we'll have a system that it will be able to verify. Like we already have a system for self verification, so I think even for that you don't need humans. Um, but you need a driver. हुँ, So हुँ, direction is more important than actually knowing what how to do something. But kind of figuring out what to do. Uh, I think that's where like humans will shine. गॉट इट। एंड व्हाट जॉब्स डू यू थिंक आर मोस्ट एट रिस्क? सो ओके, स you were hired by Meta about 8 months ago, correct me if I'm wrong, ठीक है? Yeah, और that's so right. they are hiring and they're laying off. So they are still hiring, right? They Yeah, they still need some people. ठीक है, पहले अगर 100 चाहिए थे तब let's say 20-25 तो चाहिए ही चाहिए, right? yeah, तो firstly, what jobs do you personally think are most at risk and what qualities should one develop कि यार मेरी जॉब ना जाए या मैं भी मुझे भी मेटा हायर करे? Like what do you think? yeah.
So it's a three-part answer, I'd say. One is what jobs are not immediately at risk. So anything that to do with motor control, like हाथ से आप कर रहे हैं, like you're doing Plumber, woodworking. carpenter. Those are not like immediately at risk. I think Uh-huh. eventually we already have like very advanced robots as well now. But they're like humans are probably cheaper. Pardon. So those are not like immediately at risk. Now, कोई भी काम जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, जो आप कंप्यूटर पे बैठ के करते हो, जो लैपटॉप यूज़ करते हैं लोग काम के लिए Uh-huh. या डेस्कटॉप पीसीज़ यूज़ करते हैं, उनकी जॉब्स हैं एट रिस्क। एनीवन हू डज़ और वो एनीथिंग, कोई भी काम करते हो और कोई भी लेवल पे हो, उनकी जॉब रिस्क है। कोई भी फील्ड में हो, लाइक इट कैन बी लाइक ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पहले होंगे इनफैक्ट, क्योंकि हम ही बना रहे हैं, तो वी आर यूजिंग इट इन आवर यूज़ केसेस फर्स्ट। So we are impacted first, and then you have accountants, or you have lawyers, or even you have I would go as far as saying like physicians जो कि surgery नहीं करते, they don't use their hands, but like they're looking at the patient or reading results and then diagnosing medical issues. I think that's at risk. So anything to do with like recalling memory, comprehension, connecting data, finding patterns, like all this is at risk. Like these capabilities are, AI does it very well. It doesn't get tired. It is cheap and it can keep doing it. And you can spawn as many of them as you like. So it's great at doing those things. I think for anyone, I guess like one fallback strategy or like safety net would be कि भाई आप जाके कुछ सीख लें, प्लम्बिंग सीख लें या इस तरह की कोई हाथ से काम करना शुरू कर दें, जो कि I think a lot of us are in our white collar jobs because we probably don't have the talent for it. Um, and अगर वो नहीं करना तो I think then you want to be the driver, the AI driver. So ऐसा नहीं होगा कि like सारे accountants की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, लेकिन एक बहुत ब्रिलियंट अकाउंटेंट आपको चाहिए होगा जो कि 100, 200, 300, 1000 एजेंट्स से एक साथ काम करवा सके एआई एजेंट से। सो आई थिंक everyone should learn, get ahead on like how to use these AI. Like basically, you should be able to attach yourself to a fleet of AI and produce more value than the AIs would produce themselves. Even if it's like 20% more value, you are relevant still. मुझे डर Um, लग रहा है, बट ओके। yeah. It is scary. I mean, It is definitely scary because every single time when there's a new AI feature and I just dig into it, मैं बोलता हूँ यार क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में like. So Maz, do you sometimes feel that you're working on a model that might eventually replace you? yeah. I mean, every day. Because I mean, technically a lot of software engineers who were laid off worked on a model that eventually replaced them. Yeah. I think that's what I think that's where this is heading. Um, for software engineers who were good at like writing in a certain language, code लिखना उनको बहुत अच्छा आता था. वो तो अब obsolete हो गया. I mean, that's not a skill that is high in demand or valuable. And I think we all like in big tech specifically, like we never interview people for a specific like language. We interview people on like problem solving, and Mhm. that I think still is relevant. um, so we are going to replace ourselves. I think but like I think some of us we will evolve into replacing ourselves and then elevating ourselves to the next level. So I think that is the key difference. Like आप अपने आप को तो replace कर रहे हो, लेकिन replace करने के बाद अब आप you have all this time and these AI agents to use. What are you gonna do with this power? Like this is a lot of power Mhm. that everyone has access to now. Got it. Maz, just tell me, and this question is very close to my heart. Why do we not see any Pakistanis at like the top of the company's C-suite executive level? Like we see a lot of Indians, right? But we don't see any Pakistanis. Is it because Pakistanis are not good enough, or people from India that come to
द वेस्टर्न वर्ल्ड, न्यूयॉर्क, कनाडा, ठीक है? उनके सिस्टम्स इतने अच्छे हैं जहाँ से वो शुरू से पढ़ाई करे आ रहे हैं। लाइक लेट्स से द आईआईटीज़ ऑफ इंडिया और इस तरह की जो बड़ी-बड़ी है फिर जो स्कूल्स हैं एंड आई हैव हर्ड लाइक इट्स डिफिकल्ट टू गेट इनटू आईआईटी देन इट इज़ टू गेट इनटू हार्वर्ड और एमआईटी, लाइक इट्स सो डिफिकल्ट, राइट? It's true. Yeah. सो डू यू थिंक it's that they have more talent or that they have better systems that help them to grow? Yeah. Good question. I've worked with, or I've had like both like Indian engineers that have worked for me and Pakistani engineers that have worked for me, as well as leadership that I have worked for that were Indian and Pakistani. I'd say talent-wise, I don't see that Pakistanis are like any less per se. Like I've seen like again, like I'll go back to my experience in Pakistan. Some of these guys that I worked with, they were like in their early 20s. And I told them like point blank, यार तुम लोग इतने तेज हो, तुम लोगों की एज में I was like बहुत ही पीछे. And so like there is a lot of talent in Pakistan as well. Um, for sure, I think I agree कि systems उन्होंने बेहतर बनाए हैं, and that doesn't happen overnight. There's education system, there's alumni network, um, there is all these paths towards like getting into these companies. So there is a lot of like there is a very high quality system in place for Indians specifically, I'd say. And the fact that all of these Um, companies are in India and none are in Pakistan. these companies are in India. I think that's of course that benefits them as well. Like Microsoft has offices in India, like huge presence. Amazon has a huge presence. Pakistan doesn't have that. Um, because of course all these companies are looking for talent that's ready, and they're able to produce this somewhat ready talent through the university system and whatnot. We हमारे पाकिस्तान में वो अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम इतना अच्छा है नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती. तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स लाइक पाकिस्तानी टैलेंट सफर्स, लाइक they are not getting the exposure, the challenge that if they did get in the initial or early phase of their career, they can they're definitely like some like super talented people in Pakistan that would do like really really well, and we would see like those people in the C levels of these big tech companies. Mhm. So yeah, in my opinion, I think it's more about the system, more about The it is opportunities, kind yeah. For most things in Pakistan, it's basically like जो country का जो political environment है उसकी एक kind of like एक परछाई है, like हम्म, whether it is our cricket or दिल की बात कर दी. हाँ, तो वो जो जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं वो अफेक्ट करते हैं हर चीज को, and this is like just one of those because we are like very similar people like Indians and Pakistanis. Mhm. um Culturally be I think very similar. There's a little bit of a culture thing between India and Pakistan, I would say, but that can be changed. I think उन्होंने भी change किया हमारा, like we don't have like good role models, like we don't have like that one person. Now we have this young Pakistani founder of that company, what's it called, Cursor, I think. Mhm. One of the founders Pakistani, so like hopefully like he's going to be a good role model. But हमारे पास तो है कि नहीं है, सत्या नडेला है उनके पास, सुंदर पिचाई है. We don't have such examples in Pakistan. Yeah, and they're all from I think IITs, like India से ही पढ़ के बाहर गए and now they're like Yeah. CEOs of like big Sat- company. both of them, Satya Yeah, and Sundar, at least I know, they're yeah, both like I think they're both IIT yeah. I think grads. so too. Yeah, a lot of them like study in India and then they go to the United States. I mean, the Twitter Uh, CEO was an Indian before, obviously, was bought out by Elon Musk. yeah, Parag Agrawal. He's building a Yeah. very cool startup now. Yeah, he's building a very cool company. Um, so yeah, I mean, we do have talent. We need more, of course, better systems, more nurturing of the talent. More people need to give back, of course. Mentorship उतनी नहीं है जितनी हो सकती है. Um, yeah, government support नहीं है.
And yeah, I think Pakistan mein, I think general lack of role models bhi hai. You know, Pakistan हाँ. mein we have um, just like it's a cultural thing, but Pakistan mein people, you know, want aspire to be to have like material things mostly is what I've noticed. Like you know, like गाड़ी हो जाए अच्छी, घर हो जाए, crazy, sad. Also, Maaz, I'm not sure um, if you have noticed, but I have noticed that Indians try to uplift their fellow Indians, like fellow country mates. We Pakistanis do not do that, sadly, right? हम लोग ये कोशिश करते हैं कि यार हमसे बेहतर कोई ना हो जाए. But I've spoken to Indians. I have like quite a few friends here. और I've always seen कि यार they're always trying कि यार उनकी फैमिली से लोग यहाँ आ जाएं, उनके दोस्त यहाँ आ जाएं. They're trying very hard कि यार to uplift their friends, family members. We Pakistanis do not. भी हम बोलते हैं यार आप उधर ही रहो, पाकिस्तान की जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत मुश्किल जिंदगी है. हाँ, ये बात है. Um, yeah, I think Pakistanis, um, I think like generally we want to help, but I think like हम डर जाते हैं. डर जाते हैं कि यार because you know like we work harder to get to places that we get to. So then you know like we are a bit more scared and insecure about like our positions. And we don't want to extend that help कि हमें डर लगता है कि यार कहीं हमारा बैकफायर ना कर जाए ये चीज. You know और पाकिस्तान में ये होता है अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वही वाली सिचुएशन है कि जब जहाँ पे आपके पास ओवरऑल when the pie is big like you know you want to share Hmm. because you have a limit of how much you can eat but when the pie is small um, you know it kind of makes you think that way. Hmm. Yeah. No, totally So I makes think sense. that is one of the reasons too. Like पाकिस्तान में जो भी बंदा आगे निकलता है वो फिर अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो ऊपर जाके फिर आप लाइक उल्टा आपके नुकसान हो जाता है. हाँ. So I think people bring that outside of Pakistan as well. It's unfortunate, but yeah, it happens. Yeah. Also, Maz, एक और चीज मैं अभी सोच रहा था कि and it's I think it's a great question for you because you were in this space during the COVID era. So 2020 to 2022 में I think especially this time frame में पाकिस्तान में startup boom बहुत आया था. The Yep. likes of Airlift, Swivel, Kareem was in the country, Uber, and I'm sure like there are like a lot of startups. The Gear, I can't remember the other names, but बहुत सारे होते थे. और Bazaar was there. correct. Bazaar is still here. It's still around. And the fact मैंने बहुत podcast सुनता हूँ अभी भी. उस वक़्त होते थे बहुत सारे पाकिस्तानी फाउंडर्स आते थे अपने पॉडकास्ट अपने कंपनीज़ के बारे Yeah. में बताते थे। अब कोई नहीं आ रहा, कोई है ही नहीं। आई डोंट सी एनी न्यू फाउंडर्स कमिंग इन। सो वो जो एक बूम था, ठीक है, जो आया था, वाज़ दैट दैट कोविड बूम जो पूरी दुनिया में आया था टेक में अब जैसे मेटा एंड लाइक दीज़ बिग फर्म्स, दे ऑब्वियसली ओवर हायर्ड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग कोविड, राइट? सो डू यू थिंक ये जो पाकिस्तान में भी जो एक स्टार्टअप बबल था या वाज़ इट कि यार गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इतनी फेवरेबल नहीं थी इसलिए वो सस्टेन नहीं कर सका? It's a bit of both, but on a very high level, I think what it was that interest rates went like down, and so like Yes. capital became like very cheap in North America, and North American VCs and these big funds they wanted to diversify their portfolios, and they're like, let's try to look for these companies in these countries. Then there were some key players in Pakistan, for example, I think Atif Awam was one of them former LinkedIn VP that he moved हुँ, back and he started his own fund and ये कुछ लोग थे तो वो लोग या, बहुत बहुत ज्यादा पैसा लेकर आए क्योंकि there was risk appetite पैसा was cheap they're like यार यहाँ पे भी इधर इनको भी दो let's see maybe like you know will unlock some new revenue potential new market and of course when Pakistani founders saw this opportunity startups started popping up from हर गली के कोने से या, एंड बहुत सारे जो इसमें से स्टार्टअप्स थे वो रेप्लिकास थे बहुत सारे में धांधली भी हुई आपको पता ही होगा पाकिस्तान में एंड one thing that you will note is that a lot of these startup founders these guys are already from
these are not like the average Pakistani. Most of these Mm. founders um, Yeah. already are from business families. They understand how the flow of money works. Um, so they have like a lot of leverage in Pakistan already, connections, all of those things. So they were able to leverage that to capitalize on the inflow of the money. I think that's what happened. Um, and lo and behold, because they were not creating real value, eventually, of course, and money, of course, became more expensive. Interest rates started rising again. Um, it dried up. Uh, Mhm. and the VCs, I think, had a bad or sour lesson to learn. कि यार यहाँ पे ड्यू diligence ज़्यादा करनी पड़ेगी. These guys are, you know, can be a bit tricky to work with. Yeah. Exactly. Do you know of any success story from Pakistan? So I know Bazaar is doing really well. It's still around. Yeah, But I've not heard of any other names that are still around, like big names. I think Bazaar was one of the best ones. Like what they built, and they built it properly, and um, I think they're still around. They're able to like turn around their model as well. Um, Honestly, you're right. Like besides Bazaar, I know Airlift was not able to, you know, that got shut. Civil had it's not a Pakistani startup, but like also, Yeah. did not work well in Pakistan. Kareem also did not like exited, although it's Yeah. sad. Such a great Pakistani founder, Yeah. Mudassir. Um, but yeah, to be honest, like besides that, homegrown Pakistani. I mean, there's some like co-working space startups that were built that I think Yeah. 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 are still Yeah. doing Collabs well. or something. I think एक नाम याद है. There's the collabs, exactly. There's Yeah. collabs, and Yeah. there's another one. I think those guys are still like doing well. They found like a Mhm. model. Okay. Um, but yeah, none other that my LinkedIn feed is very dry these Yeah. days. Yeah. Yeah. Um, And also, I personally have noticed, and please correct me if I'm wrong, that all the Pakistani startups that came in, they're all like service-based startups, right? Okay, we're providing you a service. कुछ mm, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी कि यार हम कुछ मुल्क मतलब ठीक है where हम आपका खाना यहाँ से लेके वहाँ पहुँचा रहे हैं, हम आपको वहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं, हम आपका जो सप्लाईज हैं, गुड्स है, वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं. So in most cases, they're all like service-based startups, right? कोई प्रोडक्शन बेस्ड स्टार्टअप ही नहीं था कि यार ओके एग्रीकल्चर पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बट कोई एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप नहीं था. कुछ वो नहीं था जिससे मुल्क का वो ना एक्चुअल यार homegrown startup and homegrown product from Pakistan that's now globally sold. mm. Some service based है. Do you think कि मेरी सही observation है? Um, Largely yes. There were some like जो इस agriculture based एक startup था मुझे नाम नहीं याद आ रहा. But there were like few and far in between. इस तरह के भी थे. Product based थे. The one that I was working on credit book, it was a like software app. It was like a खाता app जो पाकिस्तान में बहुत Yeah. यूज होती है. Um, but I would say like I've yet to see like an original idea. मीनिंग कि कोई ऐसे तरीके से आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो किसी और ने नहीं की हो किसी और कंट्री में भी यूजुअली लाइक Mhm. व्हाट वी वर डूइंग वाज कि यार इंडिया में एक चीज सक्सेसफुल हुई है लेट्स रेप्लिकेट द सेम थिंग विद द सेम तरह के लोग हैं पॉपुलेशन डेंसिटी सिमिलर है Mhm. लेट्स बिल्ड द सेम प्रोडक्ट इट वुड डू वेल आई थिंक दैट वाज लाइक largely what Pakistani founders were doing at that time. I think Uh, there is one recently that I read about जो कि उर्दू LLMs बना रहे हैं that would be very cool. That would be like net new thing. Um, and so yeah, there's some, but like वो उनको hype नहीं मिलती उतनी. mhm. Um, Yeah, there's this yeah. guy, I think, who also lives in New York. He runs this editing school. So his Mm, Instagram page is called Editing School. And mm, so I recently discovered him, and it's just amazing. Like, जो लोगों को सिखा रहा है, he mm, has, I don't know, about 100,000 followers or more on Instagram. Uh, he recently built his own app called Kalakar, right? So what it does is, so mm, और ये कोई ऐप मेरे हिसाब से नहीं करती. What it does is, so usually like for example, अभी ये podcast चल रहा है, मैं इसकी रील बनाऊंगा. अब इसकी रील में मुझे डालने होंगे कैप्शंस. अब इन मोस्ट केसेस 99% ऑफ एप्स वो आपको या तो आपको देगी
इंग्लिश में कैप्शंस देगी, सारी लैंग्वेजेस में कैप्शन देगी और उर्दू में देगी तो उर्दू लिखी आ रही होगी। Hmm. आइडली आई वुड वांट कैप्शंस इन रोमन उर्दू कि यार अब Right. जैसे अच्छा लिखो तो मुझे उर्दू में अच्छा नहीं चाहिए, मुझे इंग्लिश में अच्छा चाहिए, ACHA, ठीक है? Right. Hmm. वो ऐप कह रही है, ठीक है? और मैंने व्हेन आई डिस्कवर्ड दिस ऐप एंड आई वाज़ लाइक स्टन्ड कि यार मेरा जो काम है, जो मैं बंद 10 हो गया. मिनट में लेट्स से 1 मिनट की रील में बारी-बारी में रोमन उर्दू कर रहा हूँ, वो मुझे 1 सेकंड में करके दे दिया। इट्स क्रेज़ी एंड इट्स अ Right. पाकिस्तानी फाउंडर। Nice. So Yeah. we So I we mean, do have there are good people. examples. Yeah. Yeah. There's another like who's like a well, I know him, not a close friend, but like I've hung out with him. There's this guy, his name is Zirak, who's building this Urdu keyboard called Matan Saz, which is like tailor-made. Like the positioning of the key is like such that it should be easy to write Urdu because जो हमारा ट्रेडिशनल कीबोर्ड है वो उस तरह ही बनाया गया है कि इंग्लिश लिखना आसान है उस पे इंग्लिश के वर्ड्स के Yeah. हिसाब से so that is another one. Yeah, there are people that are doing like cool things. So yeah, as I said, like shortage nahi hai talent ki. I think systems and our reward system, जो है ना, incentive system in our culture is a little bit different than what would encourage these people. Mas, do you ever think of starting your own startup one day? Because I mean, the fact that you know a lot of people, you are in this industry, you have worked in like several startups and like big tech companies. So you do have the right resume to, do your own thing and people will actually trust you and join your team. You'll probably get VC fundings because, तो do you ever think, yeah, मैं कुछ करूँ अपना? Every day, Okay. several times a day, several times Okay. a day. Yeah, it's yeah, my wife is like kind of like bored of of this topic now because every other day I'm like, yeah, कुछ अपना करना है. I have this killer idea and let's do this or let's do that. Um, so yeah, I think it's in the back of my mind. I think that was one of the main reasons why I left banks and joined like a very early stage startup because I wanted to learn this. And then I kept at startups for a while before got married and life started demanded like more stability and then joined big tech which to be fair like I've learned a lot here as well so I think the ingredients are there it's actively on my mind at some point I think it's going to happen and I think I'm also now like in the right city as well Mhm. in New York uh, for it to happen Yeah, amazing. Well, I think we had no, not that I think we have exceeded the 1 hour mark, or I'll okay just quickly end this. So, Maz, if you had to restart your career, let's say you're just graduating from university right now, and you have to get into this tech world, what advice would you give to your younger self? कि यार ये करना चाहिए, so that other people also get inspired. कि यार, and especially given the fact, keep in mind this AI world that we're in right now. कि यार अगर कोई नया ग्रेजुएट हुए है स्पेशली पीपल फ्रॉम पाकिस्तान राइट बिकॉज उनके पास Mm, टैलेंट बहुत है अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है ठीक है नॉट एवरीवन हैज द रिसोर्सेज टू गो अब्रॉड ठीक है तो वो एक इशू yeah होता है yeah तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम yeah so um if I were to give my younger self an advice, but the younger self in 2026, because this is now AI या tailored advice, या um, I would say for new grads, it's especially tough now because the education system has not caught up to what AI can do. So I think they're not graduating as like ready for AI yeah, workforce. They're not graduating as ready for AI workforce. So I think like my biggest step would be to like immerse yourself into AI as much as possible, regardless of what your actual interest is. Like you could like graduate from finance or whatever, but I think everyone should just. It's like computers, right? Like in the 80s or 70s, whenever the first PCs or computers came around, at that time, if someone got ahead of it and used it a lot and understood it, they would have, regardless of which field they were in, they would have like done really well later on. So I think immersing yourself in AI is really important. But especially I think for Pakistani kids, um, my other advice would be to find good mentors.
I think people are really underestimate the power of like really good mentors. It can make a huge difference and shortcut a lot of your learnings. And be shameless, like when it comes to like approaching people to ask for help. Like you can go on. Like I have like cold messaged so many people to for advice, and like you'll be surprised like how like people actually have responded and helped me with my career questions. So I think find like really good mentors, really good role models that you want to emulate. That would be the second one. Um, and I think the third is I know there's like adversities like मुश्किलात हैं, system मुश्किल है, सारा कुछ है. But don't give yourself any excuses and like take ownership and agency of your situation to move ahead. Um, And yeah, like I feel like I see like a lot of people, they're talented, but they are also like they want things to happen. Things will not happen. Just work backwards from your end goal. Be like very strict with your vision and rigid on your vision, but very flexible in how you get there. Uh, and so like do whatever is required and may come in your way to get to your end goal without you know without doubting yourself in between at all. So I think that's those would be like my three pieces of advice. Got it. And Maz, the fact that you just said कि education system right now, obviously it's not as updated AI की वजह से. So let's say if you're a hiring manager right now, and if you're hiring someone, would you hire someone with like, let's say, a McGill degree, and good experience, but someone with like not a flashy degree, but way better skills than the one with the degree? Like, who would you hire personally at this point? Because एक बड़ा like हमारा discussion होता है ना, is degree important now or are skills more important? So what do you think? So there's a very like simple answer to this. The interview process that I would use or that we use is based on skills, right? So it does not matter like where you've gone to school or what you've done or what your GPA was. If you are skillful, like for example, now we are interviewing people to see like whether they're AI native or not. Are they going to be able to use AI to do like 10x more than normal other people who are not AI native? So skills is the focus in the interview, but with one caveat, I'll say this: like I've done like hundreds of interviews in my career. I have seen people with degrees from good universities doing better in interviews and also on the job uh, for some reason. And you might think, Okay. यार skill अगर आपका experience हो आपने सीख लिया है self taught it would do better. But in real life, just ratio wise, percentage wise, I've seen people from good universities um, and like with good degrees, higher GPAs, just doing better. That's a And I very think the interesting observation. reason the I think the root cause is that in while doing all of that, you build like some fundamental skills. It's not like regarding like your coding ability or but like you learn how to learn, like discipline, the value of time, like how to manage your time, how to communicate, how to manage up, how to manage up. Like those things are so valuable. It helps you a lot. So that's just that. Not to discourage anyone who's not gone to a good university. At the end of the day, like I'll be hiring for skills. Okay, amazing. No, that's good to know. But Maz, thank you very much. I think today I learned a lot. मतलब सीखा भी और डर भी लगा कि यार I need to upskill. तो again ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी skills पे for sure. But again, great advice, and I'm really happy to see where you are right now. और I would personally prefer कि यार और पाकिस्तानी talent को मैं इस तरह interview ले सकूं कि यार, and based on what you said, like Pakistanis हर जगह हैं, like they're just doing great things, and but I really hope that back home systems हमारे थोड़े बेहतर हो जाएं, और ताकि लोग जो पाकिस्तान के टॉप 1% में नहीं है वो भी आगे निकल सके, बिकॉज राइट नाउ आई पर्सनली थिंक कि Yeah. जो बस उस टॉप एलीट में है ना, टॉप लेट्स से टॉप 5% में ही है, वही अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाता है, वही और आगे बढ़ा जा रहा है, तो अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, सैडली, विच आई
personally hate. Yeah, it So breaks my heart too. Like, I mean, you're 100% right. That's we're stuck in this like vicious cycle. yeah, But inshallah, duai hai, and we should do whatever we can. We should play our part. Take some time out to give back. And yeah, it was very, very nice chatting with you, Jawan. Maza aaya. perfect. Thank you so much, Maz. And for the audience, if you have any questions, I'll have Maz's LinkedIn in the description. So please message him, reach out to him for any advice. And if you have any comments, questions, description में भी ज़रूर लिखिए. Sorry, comment section में ज़रूर लिखिए. And please subscribe and stay tuned for the next episode.